This is so emotional, Ranbir. This is so emotional, seriously. And now, ladies and gentlemen, please have a seat. Ladies and gentlemen, the man who's been there in the industry, he's been there, done that, and he's doing it again. And wow, give it up for Lord Bobby Deol. Welcome, welcome, Bobby sir. और अब जिन्हें बुलाने जा रहा हूँ, she's not just gorgeous, she's amazing. And हमने उनकी रेंज अभी इस बड़े पर्दे पे देख ली. Give it up for Rashmika Mandanna. And the man, ladies and gentlemen, the visionary, जिनकी वजह से ये सब हो पाया इस बड़े पर्दे पर. Give it up for the maverick director, Sandeep Reddy Vanga. And now it's an honor, it's a privilege to invite on stage the man who's actually the strongest pillar of Indian cinema. Ladies and gentlemen, Mr. Bhushan Kumar. The producer Saab. Along with him, would like to invite on stage Mr. Ranbir Reddy Vanga, ladies and gentlemen, the producer of this movie. And here's presenting the most amazing team of the movie, Animal. Please, आप लोग. थैंक यू कि आप सब यहाँ आए. आपने ऐसा रिस्पांस दिया हमारे ट्रेलर को, जो हम 2-2.5 साल से इतने मेहनत से काम कर रहे हैं. वी वर्क फॉर दिस काइंड ऑफ रिस्पांस, फॉर दिस काइंड ऑफ लव. तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका. आई थिंक आई गो बैक टू द फर्स्ट टाइम जब संदीप ने मुझे ये कहानी सुनाई थी इस फिल्म की. ये करीबन 3.5 साल पहले सुनाई थी, 3 years बैक. एंड आई रिमेंबर जब उन्होंने नरेशन खत्म किया, मैं कुछ बोल नहीं पाया. मैं सीधा अपने बाथरूम में गया और मैं अपने आप को शीशे में देख रहा था, थिंकिंग कि यार ये क्या सुना दिया इसने, मैं क्या कर पाऊंगा कि नहीं. यू नो, इट वाज एक्चुअली आई डोंट यूज द वर्ड डार्क बिकॉज डार्क हैज अ वेरी नेगेटिव मीनिंग टू इट. बट ये ऐसा एक किरदार, एक ऐसी कहानी, एक ऐसा दुनिया था जो मैंने पहले कभी सुना नहीं था. यू नो, मैं संदीप का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ. आई लव्ड अर्जुन रेड्डी, आई लव्ड कबीर सिंह ऑल्सो. जब मैंने अर्जुन रेड्डी देखी, ये कबीर सिंह की अनाउंसमेंट से पहले जब मैंने देखी थी, मुझे लगा कि इससे बेटर लव स्टोरी कोई बन नहीं सकती. और फिर संदीप ने फिर से वही लव स्टोरी कबीर सिंह में बनाई और मैंने कहा कि मैं चैलेंज देता हूँ, ये हिट हो ही नहीं सकती. क्योंकि जो अर्जुन रेड्डी ने जो कमाल किया था, जो परफॉर्मेंसेस थे, जो म्यूजिक था, वो रिक्रिएट हो नहीं पाएगा. बट ही डिड इट अगेन. एंड व्हेन ही ऑफर्ड इन दिस फिल्म, ये मेरा सौभाग्य था. आई वाज ग्रेटफुल कि यू नो फिल्म मेकर लाइक हिम. हंस क्यों रहे हो आप? ज़्यादा हो गया. अच्छा, I didn't laugh at the word सौभाग्य, but yeah, I was so grateful that you know I was given this opportunity. ज़्यादातर लोग मुझे ऐसे किरदार में नहीं देखते. But listen, मैं बोलते जाऊँ. I just want to say that thank you so much. We really हम सबको बहुत अच्छा लगा कि आपने ऐसा रिस्पांस दिया. It really encourages us. और मैं ये वादा करता हूँ आपसे कि जो आपने ये देखा, ये सिर्फ 5% है. फिल्म में इससे बहुत 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 ज़्यादा है. So please do come to the cinemas on 1st December. Ranbir Kapoor, ladies and gentlemen. Bobby sir, this one's for you. Of course, we know. कितना सारे लोग. मैं सबसे पहले संदीप को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जिन दिनों में जो मेरे करियर की सिचुएशन थी, मुझे ऐसे रोल कभी मिलना, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना कमाल का कैरेक्टर कभी मुझे मिल सकता है. तो एक दिन मुझे संदीप का मैसेज आया, संदीप रेड्डी वंगा, आई वुड लाइक टू मीट यू. तो मैंने बोला यार ये सचमुच में संदीप ही है, कोई और है, कुश्ती तो नहीं कर रहा कोई. तो मैंने पता किया, बोलते नहीं तो संदीप ही है. तो मैंने बोला यार फ़ोन लगाओ फटाफट. फ़ोन लगाया एंड मैंने बोला चलो मिलते हैं. एंड वी मेट. एंड मुझे ये आकर एक फ़ोटोग्राफ दिखाते हैं मेरी. इनके पास एक फ़ोटोग्राफ थी जब मैं ज़्यादा कुछ काम नहीं कर रहा था, पर मैं सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग खेलता था. तो वहाँ मैं एक फ़ोटो खींची गई थी जहाँ मैं इसे दूर कहीं देख रहा हूँ. तो उन्होंने मुझे ये फ़ोटोग्राफ दिखाई और कहा कि मैं आपको इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि आपकी ये फ़ोटोग्राफ है, इसमें जो आपका एक्सप्रेशन है वो मुझे चाहिए. चलो बेकारी के दिन काम आ गया फोटोग्राफ. वैसे मुझे फिल्म मिली. सो आई लव यू संदीप फॉर रियली गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. एंड व्हाट डू आई से, आई जस्ट हैव टू से दैट वर्किंग विद दिस अमेजिंग कास्ट एंड आई मीन
I'm a huge fan of this man out here. Yes. He is. I'm not saying मैंने इंडस्ट्री में बहुत लोगों के साथ काम किया है और सारे स्टार सुपरस्टार लोग हैं, लेकिन इतना हम्बल, इतना डाउन टू अर्थ इंसान बहुत मुश्किल से मिलते हैं हमारी इंडस्ट्री में, और वो उनमें से एक है। जब मैं इस तरह काम कर रहा था तो मैं बस इसकी आंखों में देख के खो जाता था। He was so mesmerizing as an actor. So I'm really grateful to be part of Animal, and हाँ बहुत मेहनत करनी पड़ी, ये सब bare body करनी पड़ी हमको, पर I'm glad आप लोगों को इतना अच्छा लगा, आपका रिस्पॉन्स मैं सुन रहा था और फील कर रहा था इस वक्त जब चल रहा था प्रोमो। So love you all for being here today, and please for December in theaters. Thank you so much. Thank you so much, sir, for sharing that. Lovely. I think RK na. Hi everyone, first of all. Yes. कैसे हैं आप? सब ठीक? All good? 8 and all, no? Yeah, okay. मैं ठीक हूँ. Thank you, how sweet. कर लो पर्सनल 1-on-1 है, हम तो ऐसे ही खड़े हैं जी। Sorry for the answer for your question. I feel like one thing is he makes it very easy for his co-actors rather than I think himself on set, because the first question I think he came and asked me was do you want to rehearse before the scene or do you just like rolling directly? And that was a question that I was never asked before, because generally till I started working with Ranbir, so before I started working with Ranbir, I used to just be like, okay sir, we're ready, let's roll. And suddenly here's this man who's come and asked, let's do one-on-one rehearsal and then we'll start rolling. And I realized the performance when you like rehearse with your co-actor comes so naturally and so beautifully. The chemistry builds, the rapport builds, the conversations get better. So I think that is one thing. Like, I'm speaking very professionally, so it's one thing that I've learned from Ranbir sir. Right. There's Ranbir is such an intense performer. So if you have to share a screen with him, so you have to be good enough. And I didn't think I was good enough, but I think Sandeep got it out of me. So all credits goes to this man here and this man here. Of course, we love you, Rashmika. See, सबकी तरफ से मैं कह दे रहा हूँ चांस पे डांस। थैंक यू। तू सब बोरिंग सवाल कर रहा है, तो वो असली कंट्रोवर्शियल आंसर इधर से आने वाला है। मैं वही आ रहा हूँ। So Sandeep sir, thank you so much, Rashmika. Sandeep sir, this one's for you. जैसा आरके ने बोला, काम करने में कितना मजा आया और कितनी एक्साइटमेंट थी। You know, when Sandeep ने मुझे कहा कि for the antagonist part he's going to cast Bobby sir, मुझे याद है कि जब बरसात फिल्म रिलीज हो रही थी और जो भी बॉबी सर ने उस फिल्म के बाद जो भी किया, आई रिमेंबर व्हाटएवर ही यूज्ड टू डू ऑन स्क्रीन, अगर जो उनके वो ब्लू कलर के जो चश्मे थे, द वे ही यूज्ड टू वेयर हिज वाइट शर्ट एंड जीन्स, उनके जो ही यूज्ड टू वेयर अ पर्टिकुलर डीजल ब्रांड, उनके जीन्स पहनते थे, मैं हमेशा जहाँ भी जाता था मैं लिखता था बॉबी सर ने ये पहना, तो वो सेम चीज़ शॉपिंग करता था। सो आई हैव रियली ग्रोन अप वाचिंग हिम, वीव मेट सोशली, बट जब इनके साथ काम करने का मौका मिला, आई थिंक वी बोथ आर वेरी सिमिलर पीपल, वी बोथ आर if I can say very family Punjabis, तो एक instant connection हुआ। I remember कि हम लंदन के -3, -4 डिग्रीज पे शर्टली शूट कर रहे थे for around 12 to 15 days, but there was so much warmth between us कि हमें ठंड नहीं लगी। I think ये ऐसा रिश्ता है that I will really cherish all my life. So thank you Sandeep sir for bringing us together, and thank you Bobby sir for being part of it. Love you, Ranbir. हेलो दिस इज सीमा धवन। बॉबी सर को भी बोलेंगे। नहीं, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैंने रणबीर मुझसे बहुत छोटा है, तो जब मैं कभी बाहर जाता था, इतना भी छोटा नहीं, लेकिन मुझे आज भी याद है, जब भी मैं कहीं गया कोई पार्टी पर या कहीं भी, तो मैं रणबीर से मिलता था, हमेशा बहुत प्यार से मिलता था, बहुत रिस्पेक्ट देता था, लेकिन मैं जब इसको हमेशा नोटिस करता था कि इसमें एक जो स्टाइल है, इसकी पर्सनैलिटी है, और ये भी डांस फ्लोर पे जाता था, there was nobody better than him on dance floor. And I used to just think that one day when he comes on screen, he's going to kill it. He's going to be the best.
And I guess here I am working with Ranbir, my favorite actor, and it was wonderful working with him on the first day. We shot together in London, and it was just amazing. I mean, I'm telling you, I felt so overwhelmed working with him. It was just some of the most beautiful moments of my life working with Sandeep, Pranay, Ranbir, and the whole unit. It was just the day when my shooting got over, I was like, I got up in the morning feeling sad. I said, "अरे shooting खत्म, अब मैं इनसे इतने हर दिन ऐसे नहीं मिल पाऊंगा." और हमने at least spend किए वो 12-15 दिन साथ में, so I'm always going to cherish those moments with me. की जो सोच है इतनी ओरिजिनल है कि एक्टर्स हम मरते हैं कि ऐसे फिल्म पे काम करें, ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करें. सो बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस रहा है. कैरेक्टर आई हैव प्लेड, you know, people usually see me in a particular way as a boy next door, chocolate boy, romantic hero. I don't know what he saw in me that he offered me this part. But इसने इतने रंग दिए इस कैरेक्टर में, मुझे नहीं, हर कैरेक्टर को. I think ऐसा राइटर है कि he writes for every character and he gives them a character. You know, he gives them a plethora of emotions, of complexities, and that is very exciting to portray. The switching off, switching on part was very important to me because when I was starting this film, I became a father. You know, Raha was born, so I was going on set and doing all these things and then going home and seeing my daughter. So it was a bit surreal. But you know, when you're inspired, आपका काम बहुत आसानी से हो जाता है. ये फिल्म हमने करीबन 100 दिन में खत्म कर दी, एंड आई थिंक बहुत जल्दी खत्म हुई है बिकॉज पता नहीं लगा कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ फिल्म. एंड दैट ओनली हैपेंस बिकॉज यू वर्किंग विद इंस्पायर्ड पीपल. एंड संदीप इज डेफिनेटली ऑन टॉप ऑफ द लैडर वेयर इंस्पायर्ड पीपल आर. Hello. That's the nice one. It's pretty now, the trailer's out so you can see what he is. We would like to build some mystery around it. It's just 1 week to release. But I think if I had to describe this story in a line, it would be about a man who goes to any lengths to protect his family. That's what the core of this film is. तो एक बात बोल दूं कि मैं 1 साल से बॉडी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. ये जो एंड क्लाइमैक्स फाइट है बॉबी सर के साथ, शर्ट निकालनी पड़ेगी. तो मैं और मेरे ट्रेनर लगे हुए हम लंदन पहुंचे, पंप कर रहे. पहला मेरा शर्ट निकला, सडनली जब बॉबी सर आए और उन्होंने शर्ट निकाली, मैं और मेरे ट्रेनर बोले लग गई भाई. हमारी बॉडी कोई नहीं देखेगा. मेरे को इतनी टेंशन थी, मैंने इसको इतनी बड़ी बेयर बॉडी देखा, मैंने बोला यार रणबीर की बॉडी तो कमाल की है, कैसे यहाँ तक पहुँचूंगा, कहाँ पहुँचूंगा. लेकिन मेरे तो करनी पड़ी. हम लोग इतने पुशअप 5 बजे उठ के जिम खुलवाया. तो वो होटल में जिम नहीं खोल रहे थे हमारे लिए. हमें पता नहीं कितनी चीजें करनी पड़ी हमें. अच्छा, अनिल सर का सवाल है. आई थिंक ही सिंस 40 years have really pushed the क्या बोलते हैं, push the bar where fitness is concerned. You know, if you see him today, he doesn't look like a year above 40 years old or 35 years old. So yeah, I mean, he is really a icon where fitness is concerned, and we all take inspiration from him. ये अभी 15 साल बाद जो मेरी प्रोफेशनल करियर हुई है, आई थिंक जो अंडरस्टैंडिंग मुझे मिली है, 3-4 चीज़ें. देखो, मेहनत और टैलेंट तो भी सब में, वो तो बेसिक है, वो तो आपने होना चाहिए. पर आई थिंक उससे ज़्यादा यू मस्ट हैव पेशेंस कि आपका मौका आएगा. यू नो, कभी कभी ये ऐसी इंडस्ट्री है कि साल बीत जाते हैं और आप वेट कर रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो. यू नो, यू नीड टू अर्न मनी, यू नीड टू अर्न अ लिविंग, बट दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स यू टू बी पेशेंट. सो बी पेशेंट. दूसरी चीज़ होगी सैक्रिफाइस. यू हैव टू सैक्रिफाइस अ पर्सनल लाइफ. यू नो, समटाइम्स आपके जो दोस्त अगर कुछ कर रहे हैं, कुछ बाहर जा रहे हैं, हॉलीडेज पे जा रहे हैं, देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ डेडिकेशन एंड सरेंडर जो जिसकी ज़रूरत होती है फॉर दिस टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री. एंड द थर्ड थिंग आई वुड से इज लक. तो लक तो हमारे हाथ में नहीं होता, तो लक तो आपके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते. तो जिस बारे में आप कर सकते हो वो है कर्म. अगर आपके कर्म अच्छे हैं, इफ यू आर अ गुड पर्सन, यू डू गुड डीड्स, तो आप मेक श्योर कि आपको बनने को होता है. We'll take one last question. It's not really about action. You know, you hit someone and blood comes out because वो आप 10 सेकंड के बाद आप बोर हो जाओगे. I think violence is about the mind. What the human mind thinks, what the human mind is capable of doing. Where society is concerned, what is right, what is wrong, what is good, what is bad. Is Bobby sir the antagonist or I am the antagonist? You know, who's the right person, who's the wrong person? So I think these are questions that as a society, as an audience, maybe they will start asking after this film.
But where violence is concerned, I've always believed it's not about dishum dishum. You know, it's more about what goes on in the mind. Okay, all I can say is that हम हर इंसान में एक बुरा होता है, अच्छा होता है, और हम अच्छे इंसान तब बनते हैं जब हम अपने बुरे को कंट्रोल करते हैं. लेकिन ये कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि कभी कभी हमें ऐसी सिचुएशन पड़ी रहती है कि वो हमारे अंदर का जो गुस्सा है वो आता है बाहर, सबके साथ होता है. तो ये फिल्म में एक कहानी है परिवार की जहाँ पर ऐसे सिचुएशंस आते हैं, इसलिए आप ये सब देख रहे हैं प्रोमो में. So this is a part and parcel of life, and it's just trying to explain to the society कि कोई भी अच्छा बुरा ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते, किसी की रीजनिंग हमें पता नहीं है. I guess that's what it's all about. एक सवाल पूछना चाहूँ. Basically, when I watched Arjun Reddy or Kabir Singh, I didn't think it was a violent film, but I thought it was high on intensity. So even this film like Animal, you see a bit of violence where people are killing each other, hitting each other and all of that. But if you see the emotion of the film, no, it's high on, like it's high intense emotion that you don't really. I think Sandeep as a director is someone who's unapologetically real, because he's just like, this is my story and So true. no, that's what I think. And I was like, because many a times when we were doing some scene, we were like, oh, but can you shoot it like this? Can you actually do it like this? And he was like, this is how I want my cinema to be. And it is so amazing because nobody else does that in cinema. Everyone sugarcoats everything that they want to see on cinema, and he doesn't do that. So I think that's something I appreciate him for, and I think he's a really smart director like that. And I think why there's so much conversation and why there's so much, anticipation for the film is only because of that, because we are living people's lives, which is so real to the core, and we have nothing to lie about those characters, So I think that's something I find absolutely amazing.